नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। यू आर cordially and warmly welcome. Please share my video as much as possible to propagate our views, issues and news of retirees to all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties, and to go to the government so as some concrete and positive actions be there. It is to propagate our views and issues in retiree friends, motivate retiree friends and mobilize retiree friends. साथियों, सभी रिटायरी फ्रेंड्स आंदोलित रहें और ताकि रिटायरी संगठनों के विभिन्न प्रोग्रामों में भाग ले सकें और ऑनलाइन या सड़क और कहीं भी धरना प्रदर्शन अगर देश में होते हैं रिटायरीज की कोज पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उनमें भाग ले सकें। तो उसके लिए हम आप लोगों को कहते हैं कि शेयर दी वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल ओम सच्ची जनवानी नमः। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है 28/12/2023 में। ये मेरे पास था और ये के राघवेंद्र जो है जनरल सेक्रेटरी, इनका साइन किया हुआ है। कॉमरेड संजीव बंदलिस, कन्वीनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के इन्होंने लिखा है। डियर कॉमरेड, वी आर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन NCCPA, the apex body of various central government pensioners association and bank pensioners association like the All India PNB Pensioners and Retirees Association and all Kerala Bank Retirees Forum etc. We find the acceptance of Exgratia by the UFBU in the wage negotiation with the IBA is not sorting out the long pending issue of pension updation of bank pensioners. We know all well, dear necessarily, we know well that the Exgratia means it will not be calculated for any other purpose including the grant of DR, dear necessarily. It will be separate element without any other benefit and therefore the Exgratia is not pension updation. Moreover, the Exgratia is only the current wage settlement period and not for future. This Exgratia quantum to be discussed further in future according to the agreement. The updation of pension has been denied to the bank pensioners from the time of acceptance of pension as a separate benefit decades ago by the unions in banks. We also find that the bank employees unions used to raise the issue of pensioners during the negotiation always, but only to give up the demand and settle the issue of serving employees of banks only. This time also during the negotiation 17% of wage rise is achieved for the serving employees of both nationalized banks and private banks, but no pension updation to bank pensioners as usual. This NCCPA is not wrong if we surmise that the acceptance of Exgratia by the bank unions in the UFB is in a nutshell is a sellout of the bank pensioners by the bank unions. वो कहते हैं सेल आउट है, सेल आउट बैंक पेंशनर्स का बैंक यूनियंस द्वारा, क्योंकि ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। In contrast, the central government employees and pensioners are settled
for the identical fitment formula through every central pay commission except for the fact that CPC are constituted once in 10 years instead of 5 years as in wage settlement in PSUs including banks. Moreover, the wage settlement made in RBI and NABARD are involving pension updation of pensioners of the industry too. We know very well that these institutions are akin to banks only. Any settlement for pension updation should cover the both PSUs and private bank pensioners also, which is clearly absent in the present wage settlement. The habit of including the issue of pensions in the charter only to surrender at the time of wage settlement within the IBA by the UFBU is detested by the millions of bank pensioners and others. We request you to respond to our letter and also to reject the wage settlement, leaving the pension updation of bank pensioners for decades. Your clear stand should be welcomed by both the pensioners of nationalized banks and private banks, and CCPA trust that the UFBU will take such stand to satisfy the ex-employees of banking industry. Also thanking you, yours faithfully K. राघवेंद्रम, जनरल सेक्रेटरी NCCPA। तो ये लेटर है, अच्छा लेटर है, और इसका क्या प्रभाव होगा या नहीं होगा, कुछ इसका होगा कोई फ़ायदा या नहीं होगा, ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन ये एक लेटर और भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, रिटायरी फ्रेंड्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिटायरीज एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिटायरीज एसोसिएशन ये लिखा है, 15 दिसंबर 2023 का लेटर है। मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। ये मैडम को लिखा है, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर। ऑनरेबल श्रीमती निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली, 110001, regarding updation of pension of bank employees retirees. Madam, at the outset, we express our sincere thanks to look into the plight of bank retirees. The same has been brought to your attention by various retiree pension associations throughout the country, including issue of retirees, and also to expedite the 12th bipartite settlement expeditiously, which culminated into a memorandum of understanding on 7th December 2023. Except but not to the satisfaction of retired banks. Retired bank employees who have been again left in lurch without updation of pension. On the above subject, we would like to place before you following facts for your information, which has been consciously avoided by Indian Banks Association as regards updation of pension while reaching an understanding on 7th December 2023 with United Forum of Bank Unions. You will recollect, having rightly understood the plight of bank retirees, had told Indian Banks Association at its annual general body meeting to provide one rank, one pension to bank retirees. It is needless to mention the salary of bank employees is paid out of the profit and not out of the exchequer. When the pension scheme was introduced in the banking industry in lieu of contributory provident fund scheme, the CPF
of employees held by banks were transferred to pension fund. Pension is paid out of pension fund and such cost is nil cost to the banks. It seems that there is concerted and conscious attempt by some vested interest IB officials who are in dialogue with Ministry of Finance and unions to conceal the facts from the finance minister. It is evident they misrepresent fact by appraising the finance minister that updating of pension would impact the profits of the bank due to the retirees for more than 25 years. Except for lip sympathy, there has been denying the pension updating with every bipartite settlement. To highlight the brief statistics on pension and pension fund in a glance, 31 March 2022, pensioners 6,1500 approximately 6,15,000, family pensioners 1,58,000 1,58,000 फिगर दे रहे हैं, टोटल 7,73,000 pensioners, pension fund 3,58,000 crores, interest earned rupees 22,000 crores, contribution and provisions 39,900 crores, inflow amount 61,900 crores, 61,900 करोड़ इनफ्लो है, आते हैं पेंशन फंड में हर साल. आउटफ्लो टुवार्ड्स पेंशन 25,000 25,000 करोड़ 25,000 निकलते हैं पेंशन वगैरह में. It can be easily concluded that the outflow to inflow ratio is hardly 0.38%. Hence, pension can be updated without any financial burden to the banks. ये इन्होंने कहा, प्रेयर की है आगे, और इन्होंने एक हेडलाइंस में इन्होंने दिया है, किसी ने ये भेजा है मेरे पास. The most important demand of all bank pensioners is updation of pension on the lines of RBI Employees Pension Scheme. मिस्टर अंजन्या प्रसाद हैं. अच्छा, आगे इसी लेटर में ये बीच में हेडलाइन आ गई थी कोई, प्रेयर कहते हैं. नंबर 1, अपडेटिंग ऑफ पेंशन इन द बैंक्स इन टर्म्स ऑफ द क्लॉज 12 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट डेटेड 20 October 1993 entered with IBA pursuant section 2P of Industrial Dispute Act. The pension scheme in banks was to be identical to that obtaining in Reserve Bank of India. Regulations 35(1) provides for pension updation, but it is being misrepresented. Hence pension has to be updated. ये तो प्रेयर कर रहे हैं. नंबर 2, the minutes dated 26 March 1994, wherein it is clearly written that updation clause should be on the similar lines of RBI, which as discussed and agreed by the two parties under their signature. The said minutes have to be incorporated in MOU dated 7th December 2023. The said minutes have to be incorporated in memorandum dated 7/12/2023 and effect of updation be given to bank retirees in lines with Reserve Bank of India. Hence pension has to be updated. ये स्मॉल कमेटी डिसीजन की मिनट्स थे जो भी बताई 1994 वाली. नंबर 3, द लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 1st July 2015, civil appeal number 1123 of 2015 be invoked. The judgment is based on the decision by the Constitution Bench in D.S. Nakra and others versus Union Bank of India,
AIR 1983 SC 130. The judgment has recognized that the revision of pension and revision of pay scales are inseparable. Judgment has recognized that the revision of pension and revision of pay scales are inseparable. ये देखिए खास चीज इसमें कही है जजमेंट में. नंबर बी, the government cannot take plea of financial burden to the deny the legitimate dues of the pensioners. ये भी इसने खास बात कही कि प्ली नहीं ले सकती फाइनेंशियल बर्डन का. नंबर सी, when pension is upheld to be the right and not a bounty as a corollary to avertment that the revision of pension and revision of pay scales are inseparable, updation of pension is also a right and not a bounty. Hence pension has to be updated. The version of SAB सबका साथ सबका विकास B percolated to the bank retirees who had been the backbone of this vibrant revolution and banking system and their contribution to make this country among the top 5 nations in the world. Overcoming the COVID pandemic cannot be ignored. We therefore seek your personal indulgence and request you to revisit the MOU dated 7/12/23 and give suitable directions to the Indian Banks Association to amend more particularly to clause 5 and arrive at an mechanism for updation of pension on lines with Reserve Bank of India. Thanking you. Signature दिनार कविश्वार प्रेसिडेंट और ये है रंजन न्यूरीकर, ये जनरल सेक्रेटरी हैं. और इन्होंने भेजा है DFS सेक्रेटरी, DFS को भी भेजा है न्यू दिल्ली. सेक्रेटरी ऑल इंडिया रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन को भेजा है. सीनियर एडवाइज़र इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई को भेजा है. और कन्वीनर UFBU एंड ऑल रिटायरीज फेडरेशन एसोसिएशन को भेजा है. ये बहुत अच्छा लेटर है और बहुत इन्होंने ढंग से लिखा है इसे, तो मैंने सोचा आपको बताऊं. अभी सी कड़ी में मैं ये बता देता हूँ UFBU इसमें क्या एक वो इन्होंने चला रखा है. और ये आया है SC जैन है, मिस्टर SC जैन AIBRF के, उनके दिल्ली का जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके ग्रुप से आया है, ऑफिशियल ग्रुप जो है उनका. इन्होंने जस्टिफाई करा है कि ये मतलब जो है ठीक है एक्सक्रेशिया. ये बोल देता हूँ मैं थोड़ा सा फटाफट, आप पढ़ लो, लेकिन मैं इसे कंडम करता हूँ और अब सभी लोग. इज इट ट्रू दैट एक्सक्रेशिया इज बैड? ये कह रहा है क्या सही है कि बैड है एक्सक्रेशिया, मतलब ये उसे जस्टिफाई कर रहे हैं एक्सक्रेशिया. इन द रिसेंट MOU साइंड बाय द यूनियंस 7/12/2023 IB हैज एग्रीड टू कंसिडर पेमेंट ऑफ एक्सक्रेशिया टू ऑल पेंशंस. दिस इज दैट प्रेजुडिस टू द FBU डिमांड फॉर अपडेशन. अरे भैया 30 साल से वो हुआ नहीं, उस पर काम क्यों नहीं करा तुमने? को इसे ही पासरों में डाल दो नेपथ्य में और इसे ही ले लो. Lot of adverse comments are being made about this to say that exgratia means begging and charity. For pre-1986 retirees, there are given exgratia. It was 350 plus DA, and after you have pursued the matter, IB has increased this exgratia to rupees 10,000 per month. Whether rupees 10,000 per month paid as exgratia is charity amount, ये बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको दिया है. इससे कोई बैंक पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बर्डन नहीं पड़ता, अच्छी बात है दिया. लेकिन इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स इन लिeu ऑफ द बोनस अवर यूनियंस आर नेगोशिएटिंग एंड अचीविंग एक्सग्रेशिया पेमेंट. इज इट चैरिटी? व्हाई दिस एक्सग्रेशिया? एवरीवन नोज दैट सम पेंशनर्स हैव गॉन टू द कोर्ट द डिमांड फॉर अपडेशन एंड द मैटर इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट. Hence it is sub judice and IBA was not willing to discuss the issue of updation due to the court case raised by the pensioner. UFBU has not gone to any court on updation. It is only some pensioners who have gone to the court like cases on 100% DA issue. जो आपने हरवाता है 100% DA का इशू, ये AIBRF मिस्टर SC जैन ने हरवाता है, ऐसा लोग सीनियर लोग बताते हैं. इन्होंने प्लीडिंग ठीक से नहीं करी थी और ना गए थे टाइम पे वहाँ. और अभी ये इसकी दलील ले रहे हैं कि कुछ लोगों ने लगा तुमने क्यों रिज्वाइन करा था इसमें बाद में, और रिज्वाइन करके हरवा दिया था ये केस. नंबर 1 बात तो ये है. नंबर 2 बात ये है
कि पेंशनर मजबूरी में गए हैं, जब इतने सालों से वो नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसलिए गए हैं वो, और ताकि हमारा इसी वजह से हमारा ये जिंदा भी है, वरना तुमने तो इसे छोड़ दिया था, जैसे ग्रेजुएटी इशू छोड़ दिए हैं तुमने, और कॉम्पिटिशन पीरियड का इशू छोड़ दिया, स्पेशल अलाउंस को भी तुम कवर नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, स्पेशल अलाउंस क्यों लेके आए थे तुम। और ये क्या नाम है सब जुडिस क्या होता है, तो सब जुडिस अगर है तो आप सेटलमेंट करिए या अपडेशन करिए, और नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा उसमें कि दिस एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन, बस अगर कोर्ट का डिसीजन अदरवाइज आएगा वो लागू हो जाएगा, नहीं तो ये लागू है ही है। और फिर वो तो बाद में समझौता करके उसमें जमा कर दो आप कोर्ट में, तब भी काम हो जाता है। आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट होते हैं बाद में जमा हो जाते हैं वहाँ पर। वो आप ये स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन पे झूठी बातें मत करिए दो मुंह की। सिंस द कोर्ट केस में प्रोलॉन्ग फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देयर आर पेंशनर्स हु are very old, unions wanted some immediate relief to the pensioners and IBA also agreed to extend relief to the pensioners, hence the Exgratia. Unions got us pension, unions got us more option, unions will get us updation also, but one should have some faith on unions. Are they ignorant or are they deliberate? ये होता है प्रोपेगेंडा चलाना, इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है गलत काम करके और उसे जस्टिफाई करने का। और ये है ना, इट्स फ्रॉम AIBRF ऑफिशियल ग्रुप से आया है हमारे पास। तो ये लेकिन ये लोग बाग इनकी बातों में आने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। धन्यवाद साथियों, नमन सभी साथियों को, सैल्यूट क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को और बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट को। सभी लोग संपन्न स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मंगलमय रहें सपरिवार। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, नमो नमः, ओम नमः शिवाय, जय हो। थैंक्स यू। आर के त्यागी का जवाब, थैंक्स।